हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 53। इसमें हमें शॉर्ट हैंड का एक पैसेज दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। तो इसको धीरे धीरे मैं रीड करूंगी सो दैट आप भी इसको साथ साथ रीड कर पाएं और आउटलाइंस को ठीक से समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो द general principles upon which foreign business is carried on, but if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern states of America, you will have to try full stop. No businessman and above all, no businessman whose principal business is with foreigners can possibly leave this branch of economics from his training. Full stop. If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run. Full stop. The truth of this has been shown over and over again within my own circle, and I speak for your advantage. Full stop. The principles may appear difficult to follow, and if you imagine the task beyond you, it will prove so. Full stop. But be brave, face the plain truth, and you will lighten the work and succeed, as you will deserve to succeed. Full stop. Stop. ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।